Hello everyone, I'm SK Rout here. Today's class for important polity MCQs हमें बहुत सारा MCQs discussion करी आसुचे अडट 47 OPSC रे गोटे एफर्ट रही कि to help students or aspirants to a great extent in the coming preliminary examinations. ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯାହା ଯାହା ହେଇପାରିବ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତ କାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟି 4 ଯାଇଥିଲା, ଆଜି 5 ଅଛି। ଆଜି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପାଖାପାଖି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ OCS Prelim 2023 ଏଇଟା for polity important MCQs by SK Rout sir। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ। ठीक अच्छी ओडिशा एंड पॉलिटी ऊपर आम कल आलोचना करथिले। तो बहुत सारा रही क्वेश्चंस। ठीक अच्छे, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 भी जाइए कली, नंबर 5 नंबर 4 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन जाइए कली। दैट वाज रिटर्न हाथीगुंपा इंस्क्रिप्शंस एटा कली हमें करछे। आज किसी क्वेश्चन देखिबा। Odisha is divided into how many agricultural districts? Odisha is divided into how many agricultural districts? There are 30 revenue districts by administrative districts. But agricultural district ura केमती निर्धारण करा जाए? Agricultural district ura particular soil type, fertility, crop pattern एगुरा basis रे agricultural district ura decide करा जाए Department of Agriculture and Animal Husbandry द्वारा। एवं एटा ओडिशा रे 80 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी 80। तो गोटे मिनिट सॉरी, ओडिशा रे 80 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी। ओके, सो हमें देखिबा डी आंसर अब डी 80 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स आर determined on the basis of soil type, fertility of the soil, crop pattern, weather condition by climatic condition, climatic conditions, ठीक अच्छी। तो चारिटा फैक्टर को लेकिन सॉइल डिस्ट्रिक्ट्स, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स निर्धारण करा जाए। ओडिशा इज डिवाइडेड इनटू 80 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट वेल दिखाई। ठीक है, गॉट इट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। With regards to delimitation commission for J&K, which of the following is correct? Plan delimitation commission of Jammu Kashmir was established by Parliament under Article 82 under Jammu Kashmir Delimitation Act 2019 Reorganization Act under कराई। एवं एटा ठीक अच्छी। रंजना प्रकाश देसाई was the chief justice of the justice Ranjana Prakash Desai was the chairman of the delimitation commission, and for first time reservation for एटा भी ठीक अच्छी। delimitation has been done on the basis of 2011 census। तो all are correct। A
ठीक है। Delimitation means readjustment. Delimitation टा not increase in the number of seats. Delimitation is carried out under Article 82 of the Constitution, and accordingly delimitation has been established हुए एवं से अनुसार स्टेट मानकर भी डिफरेंट आर्टिकल अच्छी डिलिमिटेशन रो। तो ये जोटा अच्छी हमरो कौन 82 और 1 এটা হচ্ছে কেতে 83 84 तमने सेटा स्टेट पार्ट रे भी रहे। तो यहाँ हूँ जम्मू काश्मीर विशेष विवरणी एवं तार डिलिमिटेशन काम सरी ऑलरेडी इलेक्शन सरिलानी। तो दैट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। with regards to the delimitation এটা তো সেই উঠি হলা। ওকে, what is the provision of safeguarding the autonomy of the Supreme Court of India? Look at the 4 points that are mentioned in the कोटा आ भितर सुप्रीम कोर्ट कोटा ऑटोनॉमी बा इंडिपेंडेंस को सूचौछ। While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India। ठीक है बोइटा, जदियो Chief Justice will consult the 4 other senior most judges which is known as collegium, सेटा करिवे किंतु Chief Justice को consult करा जिवो, सेटा गोटे प्रोविजन। तो सेटा स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट हबो। Statement 2, the Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India. Supreme Court judges are not removed by the Chief Justice of India. They are removed by the Parliament, by the President on the recommendation of Parliament. Then Judges Enquiry Act उठे कराई 1968 मसीह ता अंडर रे से माने रिमूव होंती misbehavior, proven misbehavior and incapacity ground रे। So they are not removed by the Chief Justice, rather they are removed by the President on the recommendation of Parliament। Parliament रे गोटे रिमूवल रिजोल्यूशन पास हो स्पेशल मेजोरिटी तापर से माने बाहरिबे बा रिमूव हेबे, तेणु से माने इंडिपेंडेंट सेति पई। तो सेटा भूल अछि, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। The salaries of the judges are charged on the consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote। एटा भी प्लान ठीक अछि। ई जो पॉइंट उरा एटी बदल जाय पारे, एटी धर लिखि देबो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स, ताल भूल हे जिवो। तेनु प्रति वर्ड को तुमे जज करिवो, कारण प्रिलिमिनरी टा एमसीक्यू बा ऑब्जेक्टिव टेस्ट टा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऊपर डिपेंड करे। गोटे गोटे वर्ड चेंज हेले आंसर चेंज हे जिवो, तो सेटा नजर करदियो। किंतु वर्तमान एटा ठीक अछि। प्लान चार्ज एक्सपेंडिचर माने जोटा लेजिस्लेचर भोट करि पारेनी, अर्थात रिड्यूस करि पारेनी, डिस्कस करि होबो। चार्ज एक्सपेंडिचर आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट but they are not subject to vote। तो इटा ठीक अछि। All appointments of the officers and staffs of the Supreme Court of India are made by government only after consulting the no। এটা ভুল अछि। The appointment of the officers and staff of Supreme Court are made by the Supreme Court itself, by the Chief Justice, not the government। The government is not involved। सेटा कोंती freedom to appoint its own staff 145 आर्टिकल बदे अछि सेटा रेरा। तेनु सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट रो निजस्व स्टाफ अपॉइंटमेंट करिवार स्वाधीनता अछि, सेतिरे गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवो नाही। That is also provided to add to the independence of the judiciary। तो यहाँ भूल अच्छी, तमाने एथिरे 1 और 3 आर करेक्ट, बाकी 2 and 4 आर इनकरेक्ट। 1 and 3 देखिए आंसर कौन अच्छी 1 and 3 रे ऑप्शन अच्छी नहीं देखिए। यस 1 and 3, तो 1 and 3 टा हबो आंसर हबो ए। समझ में आया कि नहीं? है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो चलते हैं। कितने नंबर? 15 नंबर एटा कितने थिला? हाँ एटा 15 नंबर। 15 in the Parliament of India the purpose of an adjournment motion is to
to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance, to let opposition members collect information from the ministers, to allow reduction of specific amount in demand for grant, to postpone the proceedings to check an inappropriate or violent behavior on the part of some members. No, that is simply adjourn. ए जोटा अच्छी ऑप्शन डी टा सिंपल होची adjournment, एटा मोशन नो adjournment. It is declared by the presiding officer. But it a reduction in the cut motion. It a cut motion. During the budget, passage of budget, lots of demands are passed, and after demand is approved by Lok Sabha, passed by Lok Sabha, it becomes a grant. Therefore, that is cut motion. To let opposition members collect information from the ministers. That can be also calling attention motion, or any other motion can be used, calling attention motion. So answer is A. Adjournment motion is a very special kind of motion which is introduced in the Lok Sabha usually because it is directed against the government, and it requires 50 support members support. Adjournment motion is one of the motions, few motions which require 50 support of 50 members of the house before it is introduced, and it has to be allowed by the speaker. So adjournment motion is usually moved in the Lok Sabha because it is directed against the government and it seeks the authoritative statement from the government. It also aims to criticize the government for its lapse, and if adjournment motion is carried, means passed, then the government has to resign. So that is a very special kind of motion. Remember, like no confidence motion, adjournment motion also require 50 support of 50 members of the Lok Sabha. The motions are proposals used by the parliament. So that is A, option A. Question number 16. Consider the following territories. Union territories are not represented in the Rajya Sabha. It is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate the election disputes. According to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and Rajya Sabha only. These are varied options, but different topic ଉପରେ ଏମିତି ବି ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 3-4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ କରିକି ପଚାରିଥିବ। ତ ଇଏ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ରାଜ୍ୟ ସଭା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିକଜ ଅଲ୍ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟନ୍ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ Rajya Sabha, and the representation of Rajya Sabha is provided by the Parliament. So accordingly, those union territories who have legislative assemblies have their representation. जो मानकर लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी पुडुचेरी है, जम्मू काश्मीर है और दिल्ली है, ये तीनोटी केंद्र शासित अंचल यूनियन राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन अच्छी। तेणु यूनियन टेरिटोरीज मानकर राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन अच्छी बोली कहले भूल हेनी। तो तीनटा है आमर पुडुचेरी, जम्मू काश्मीर और दिल्ली। तो यहाँ भूल अच्छी। It is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate election disputes. Etai pilan bhul achi karan election disputes are resolved by the High Court of the state concerned. It is not under the adjudication by authority of the Election Commission of India. According to the Constitution, Parliament consists of etai bi bhul achi Article 79 re. Article 79 re kuhaichi Parliament consists of not only Lok Sabha and Rajya Sabha but also the President of India. President is also an integral part of Parliament because of various reasons, like his assent is necessary for a bill passed by Parliament becoming an act, and he also sends message and also addresses the Parliament. He summons, prorogues the sessions in Parliament, and he also dissolves the Lok Sabha, and he also summons the joint sitting of Parliament. So President has lot of constitutional functions towards Parliament, so he is an integral or inseparable part of Parliament बोली कहा जाए। सेतिपई इटा भूल अछि। ताले all the statements given above are correct, none is correct। None is correct बोले इटा भी भूल, इटा भी भूल। Yes, none is correct। Answer of D। चलो चलते हैं आगे।
आगे आगे चलो दिवाली हैप्पी दिवाली तो विश करी मु लास्ट को मझे भी कहीदेली हैप्पी दिवाली। हाँ तो जोश रखिले सबू संभव हो पार। ठीक अच्छे सेशन को आसिकी जोश रख कमेंट दियो विभिन्न प्रकार आइडिया दियो इनवॉल्व रहिले आराम से सब जिनस हासिल हो पार। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड जस्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। Consider the following statement. Article 131 says that if there is a federal dispute between the states and center, then Supreme Court has the exclusive power to settle it. If there is a federal dispute between states, then the high courts have exclusive powers. The judges of the high courts can remain in office till the completion of 62 years of age after the 15th Constitutional Amendment Act 1963. मतलब एटा ठीक अछि, एटा भूल अछि जदि एटा ठीक हो। फेडरल डिस्प्यूट्स माने कोन? फेडरल डिस्प्यूट बा संघीय जो द्वंद्व संघीय कॉन्फ्लिक्ट गुरा सेगुरा माने होची राज्य बा केंद्र भितर जो कॉन्फ्लिक्ट विभिन्न इश्यू उपरे आउ राज्य भितर कॉन्फ्लिक्ट को भी फेडरल डिस्प्यूट कह दे। त माने फेडरल डिस्प्यूट्स रेफर्स टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड आल्सो बिटवीन और अमंग द स्टेट्स इन इंडिया। एंड Supreme Court is a federal court. It has the sole authority to decide federal disputes. The high courts and other courts and tribunals do not have the authority to decide federal disputes. Therefore, the statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, and the judges of high courts are retired. It is ठीक अछि। 15th Constitutional Amendment Act 1963 रे हाई कोर्ट मानकर जजेस मानक रिटायरमेंट एज को 60 रु 62 को इंक्रीज करा हितला। तो माने 2 and 1 and 3 आर करेक्ट। देखिबा हम आंसर कोन अछि 1 and 3 are correct. Yes, so C answer 17 answer C। ठीक अछि 17 आंसर सी हेबो। आसीबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following is correct? The state government can determine the language of each court within the state. The state government can determine the language of each court within the state except the high court. The state government cannot determine the language of any court within the state. The state governments can determine the language only in administrative tribunals. लाने इटा स्टेट गवर्नमेंट जो अच्छी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अच्छी आर्टिकल 348 अंडर रे Supreme Court and High Court's language shall be English. Article 358, Article 348, the language of Supreme Court and High Courts shall be in English. तेणु 348 से कही दी। तेणु राज्य सरकार हाईकोर्ट भाषा निर्धारण करें। तेणु यहाँ भूल हम यहाँ ठीक हम एक्सेप्ट हाईकोर्ट अन्य लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ट्रिब्यूनल है ओडिशा रे जहाँ जहाँ अच्छी से ओडिया भाषा हम से राज्य सरकार करेंगे। तेणु राज्य सरकार केवल हाईकोर्ट को छाड़देले अन्य जिते कोर्ट अच्छी ट्रिब्यूनल अच्छी तार भाषा निर्धारण करें डिटरमाइन करें। तेणु से ठीक अच्छे आंसर एगुरा सब भूल अच्छी। तेणु आंसर हम बी। ठीक हुआ, ठीक ठाक चल रहा है सब। पढ़ाई कैसे चल रहा है? नहीं कि खाली यूट्यूब एंटरटेनमेंट कराउची ना पाठ पढ़ा भी चलची ठीक ठाक। हमें टारगेट करिबा ओपीएससी रु यूपीएससी तो लगे रहो until you become an IAS और IPS। जोश होना चाहिए। आसिबा में नेक्स्ट क्वेश्चन को। Question number 19. Consider the following statement regarding the estimate committee of the Lok Sabha. It consists of 30 members who are elected by the members of Lok Sabha from amongst themselves. It is mentioned in 310 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha. Its chairperson is also elected by the members of the House, which was established in 1950. प्लाने
estimate committee is a major committee exclusive to Lok Sabha. एथिरे राज्यसभा मेंबर न थांती, एथिरे केवल लोकसभा मेंबर थांती एंड यस इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स. इटा ठीक अच्छी 30 मेंबर्स ठीक अच्छी एवं हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द Lok Sabha amongst themselves. इटा भी ठीक अच्छी. It is mentioned in the rule of procedure rule 310 रे मेंशन अच्छी. इटा भी ठीक अच्छी. रूल 310 एवं सेटा 208 बदे पब्लिक अकाउंट कमिटी ओडे पड़थिला लास्ट ईयर ओपीएससी परीक्षा प्रिलिमिनरी रे. तेणु ये रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस होची हाउस निजे तैयारी करे. लोकसभा रे भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर अच्छी, राज्यसभा रे भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर अच्छी. कारण कॉन्स्टिट्यूशन रे डिटेल्स नाही केमती हाउस फंक्शन करिवो, सेति पय लोकसभा और राज्यसभा रो निज निजर रूल्स तैयारी करा हिची त कुआ जे रूल्स ऑफ प्रोसीजर. तेणु लोकसभा रो रूल्स ऑफ प्रोसीजर नंबर 310 रूल रे एस्टिमेट कमिटी वर्णित अछि. एवं chairperson is not elected, chairperson is appointed by the speaker, he is appointed by the speaker of the Lok Sabha and it was established in 1950. It a John Mathai committee recommend करतला. It was recommended by John Mathai committee. It was recommended by John Mathai committee and it is a major committee and the purpose of the committee is to ensure efficiency and economy in the budget estimates. It ensures that money sanctioned by parliament matches the money spent. So economy and efficiency आने पे recommend करे एवं देखे कि पब्लिक मनी प्रॉपरली स्पेंड होची ना नहीं. सो इट इज ए मेजर कमिटी ऑफ लोक सभा दैट इज देयर. सो आंसर कौन हम देखो ताले एक नंबर टा ठीक अच्छी, 2 नंबर टा ठीक अच्छी, 4 नंबर टा ठीक अच्छी. ओनली 3 ऑप्शन हम, ओनली 3 आंसर हम बी. आंसर बी हम. चलते रहो ठीक अच्छी. चलो आम चलवा आगु को 19 नंबर गला. ठीक से डिटेल डाटा नब केमती मु लिखुची किए कमिटी रेकमेंड करथिला, कमिटी उद्देश्य कौन टू एस्टाब्लिश इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द एस्टिमेट्स ऑफ द बजेट. बट द कमिटी इज क्रिटिसाइज टू हैव पोस्टमार्टम इन नेचर. कमिटी माने कौन से मानकर परे काम करती, बजेट पास होला परे ये काम करे. तेणु पोस्टमार्टम, तेणु इट इज नॉट, इट्स इम्पैक्ट इज वेरी not very effective on the parliamentary financial control over the executive. ठीक अच्छी. नंबर 19 गला. 19 then 20 sorry 20 टा कोड अछि 20 yes. ओडिशा क्वेश्चन आसला किछि. ओडिशा क्वेश्चन हम देखिबा. Look at the question. ज्ञानपीठ अवार्ड इज ईयर ऑफ कन्फर्मेंट. एटा 4 जनकर ज्ञानपीठ अवार्ड मु दे दीची. एटा केवल मोर उद्देश्य हला कारण ऑब्जेक्टिव करले हमर कोन असुविधा हबो को ऑब्जेक्टिव करले हमर जो कांसेप्ट क्लियर हबो. तेणु जो ओडिशा ऊपर तुमर कन्फर्म डाउट रहउची ताकू मु पूरा समाधान करिवि एवं हमर 9 आवर ओडिशा बैच तो ऑलरेडी आरंभ होई गेची. पिला माने एडमिशन आरंभ करनी. तुमर जदी किछि जो मान देखुछो व्यूअर्स से मानकर जदी थाए किछि बुझि कंप्लीट पैकेज न पाई ओडिशा ऊपर तल जॉइन करो 9 आवर ओडिशा बैच. तो एई टाइप रो बहुत सारा क्वेश्चन मो हमें करी कि दबु जोटा कि तुमको जे कोनोसी परीक्षा पई एसएससी टू आरंभ करी यूपीएससी पर्यंत काम दब एवं जो माने सिविल दब सेति पई से बैच रे लॉन्ग टाइप आंसर भी लिखा हबो. तेणु जदि तुमर दरकार अछि तले जॉइन इमीडिएटली. द क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th नवेम्बर भी लिखाई. ठीक अच्छी. तो सेटा देखिबो एवं जदि कोड यूज करियो मो कोड ऊपर लिखाई Y963 सेटा यूज कर दियो. बर्तमान देखो क्वेश्चन को 4 जन जो ज्ञानपीठ अवार्ड पाइछंती गोपीनाथ महांती, सच्ची राउतराय, सीताकांत महापात्र सीताकांत महांती नोरे एटा महापात्र. सॉरी पिलाने एटा टिके भूल हो जाइछि. महापात्र सीताकांत महापात्र. तो एटा 2011 ठीक अच्छी. सच्ची राउतराय 1986
86 এটা হবো সীতাকান্ত মহাতি 1993 प्रतिभा राय अच्छा तो नॉन এটা তো হাউ মেনি দেই দিছি রে হাউ মেনি হলে কেমতে হবো না 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 এটা এমতি করো এটা টি ভুল হইছে কোশ্চেনটা ভালসে দেখো এটা হবো प्रतिभा राय 2011 गोपीनाथ महांती 1973 सच्ची राउत राय 1986 এটা হচ্ছে 1993 তার মানে आंसर হবো কোন করিবা এটা ভুল হইছে অপশন টিকে দিহাই পারনি এটা হবো A4 B B B हला केते 3 और C हला 2 और A हला A4 और D हला D सॉरी D हला 1 तान एमती हम टीम कर दी देखि दे आंसर उरा सच्ची राउत राय सीताकांत महापात्र सच्ची राउत राय इज द सेकंड टू इन द ज्ञानपीठ एंड सीताकांत महापात्र इट इज महापात्र हो एटा प्लाने महापात्र हो एटा महांती हिची प्लीज रेक्टिफाई इट एंड ओनली 2 सो एटा एमती आंसर करो A4 B3 C2 D1 निकी सीताकांत महापात्र that is the logic please rectify these questions take it as rectified all right okay so 86 is Sachi Raut Ray तो मैंने A4 B3 C2 and the प्रतिभा राय the last awardee that is D look at the question 21 which of the following literary works was written by Gopinath Mahanti এটা তুমি মান থিলে ভালো ইতান্তা রেকর্ডিং ক্লাস আপলোড হউছি তেনো आंसर दे दिते मु तो दे दोची बट एठी दादी बुढ़ा परजा अमृतर संतान अमृतर फल एटा कहा द्वारा गोपीनाथ महांती नोटेड लिटरेचर ओडिसा रो मॉडर्न लिटरेचर भितरे गोपीनाथ महांती स्थान अग्रगण्य ही इज वन ऑफ द लीडिंग and most brilliant literature Odisha has ever produced and he is the first Jnanapita awardee and सेटा तांकर बहुत सारा novels विभिन्न language रे लिखा अछि he had touched the inner life of tribals and also his novels based on socio-economic life in rural Odisha especially so he is remembered for his contribution to Odia literature and he had penned many works many famous works ता भितरु एथरे को वर्क ता तांकर दादी बुढ़ा तांकर परजा तांकर अमृतर संतान भी तांकर अमृतर फल होची मनोज दास एवं एथिपई से सरस्वती बोधे सम्मान पाइथिले सरस्वती सम्मान अमृतर फल केंद्रीय साहित्य अकादमी पाइछंती तो सेटा तांकर द्वारा नुह गोपीनाथ महांती को द्वारा नुह तो एटा 1 2 3 हबो 1 2 3 तो आंसर हबो बी आंसर बी हबो आंसर बी ठीक है आंसर बी हबो एटा होची आंसर बी केते नंबर 21 नंबर 22 नंबर द फेमस ओडिया लिटरेरी क्लासिक रसकल्लोल वाज कंपोज्ड बाय ओडिया लिटरेचर ऊपर किछि क्वेश्चन आसुची तण मु पॉलिटी बाय ओडिसा ऊपर देई दोउची अन्य सर मान भी दउछंती तो डिफरेंट एंगल रे क्वेश्चन देखिले हमर मन रहबो दिनकृष्ण दास इज द राइटर तो ए हबो आंसर दिनकृष्ण दास बिलोंग टू द एज ऑफ मीडिया माने पंचसखा एज बोली कुहा जाय एवं मीडिएवल लिटरेचर रो गोटे अग्रगण्य कवि से तांकर बहुत कविता जो रसकल्लोल इज ए कंपोजिशन ऑफ ट्रू ओडिया लिटरेचर बोली कुहा जाय तन देखिबो तांको ऊपर और सब बहुत सारा जिंस अछि तांको गोटे नजर करथिबो
नॉले नो ओडिशा बैच रे जॉइन करि जाओ बहुत बढ़िया हो। Which one of the following is the correct sequence of formation of commissions from starting from the earliest ରୁ आरंभ करियो। चारटा कमिशन देछि, फाइनेंस कमिशन, प्लानिंग कमिशन, इन्वेस्टमेंट कमिशन आउ इलेक्शन कमिशन। कोटा ठीक हबो, कोटा ठीक हबो, बेसिकली कोटा ठीक हबो ए जो मैथ्स माने कोन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे कोटा ठीक हबो। ठीक है पिला कही दूसरी देख यहाँ तो 1951 ये जो दुईटा रहा प्लानिंग कमिशन और इलेक्शन कमिशन, प्लानिंग कमिशन और इलेक्शन कमिशन जो दुईटा रहा, प्लानिंग कमिशन इलेक्शन कमिशन रो ईयर ऑफ एस्टाब्लिशमेंट एका, ये भी 1950, ये भी 1950 रे एस्टाब्लिश होता के प्लानिंग कमिशन इलेक्शन कमिशन, किंतु डेट मंथ अलग अलग। ये प्लानिंग कमिशन मार्च 1956 रे होता 1950 रे, और इलेक्शन कमिशन होची जनवरी 1950 रे होता, एवं जनवरी 25 इलेक्शन कमिशन से जनवरी 25 को नेशनल वोटर्स डे हिसाब से पालन करा जाए नहीं कि जनवरी 25 टा बोधे, तो से तो यहाँ फास्ट किए आसो, यहाँ आसो इलेक्शन कमिशन, तापर प्लानिंग कमिशन, तापर फाइनेंस कमिशन, तापर इन्वेस्टमेंट कमिशन टा होची, इन्वेस्टमेंट कमिशन टा होची 2004। तेणु आंसर हम इलेक्शन कमिशन, प्लानिंग कमिशन, फाइनेंस कमिशन, इन्वेस्टमेंट कमिशन, तो आंसर हम बी। First Finance Commission was established in 1951 under Article 280, and the first chairperson of Planning Commission of India as Finance Commission was K.C. Neogi. K.C. Neogi was the Planning Commission. Investment Commission was established during the Manmohan Singh government to ensure multilateral investment in the country. ठीक है, आरंभ करिए। हम नेक्स्ट स्लाइड आसीबा, लगे रहो। Which of the following is not correctly matched the folk dances and place of origin? रणप्पा, घुमुरा, झामू, नागा। ठीक अच्छे, आ भर कौ डांस गुरा ओडिशा रे बा ठीक से मैच नहीं, को अंचल रही सब फोक डांस रो भिन्न भिन्न अंचल अच्छी, जदियो भिन्न भिन्न फोक डांस भिन्न भिन्न अंचल भी देखा जाई था, किंतु तांकर ओरिजिन गोटे अच्छी, सेति पे क्वेश्चन टा अच्छी। रणप्पा खुर्दा आउ जोटा अच्छी हमर कौन घुमुरा कलाहांडी, झामू कटक आउ नागा पुरी एटा कोटा हबो? Which will be the answer? ओके, रणप्पा गंजाम हबो, एटा खुर्दा अच्छी गंजाम जा ओरिजिन अनुसार, बाकी सेमती नहीं जे से जिल्ला रे होउनी, गंजाम आंसर ए हम। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वेटेज ऑफ दिस क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन गिवन बाय 15 फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। प्लान 15 फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया was headed by N.K. Singh, Dr. N.K. Singh, and it has already given report to the government of India, and the period of 15 Finance Commission is 2021 to 2026 due to COVID-19 तार period extend होइछि। तेणु आगु 20 रु 25 थिला, एबे 21 रु 26 हबो, 20 21 आ 25 26 तार पई से रिकमेंडेशन दैछंती। एवं एथिरे जो जो क्राइटेरिया रे डिवोल्यूशन हुए, क्वेश्चन टा कोन पचारछि माने जो राज्य मान को पैसा दिया जाए को भिन्न भिन्न क्राइटेरिया रे डिवोल्यूशन करा जाए। जेन इनकम डिस्टेंस हला, धर इनकम डिस्टेंस माने कौन माने हाईएस्ट इनकम स्टेट रो आउ गोटे स्टेट रो जोटा जो स्टेट रो हाईएस्ट इनकम अछि, अन्य स्टेट मानकर केते पैसा डिस्टेंस अछि। जी हाईएस्ट स्टेट इनकम धर एवरेज इनकम हाईएस्ट टोटल इनकम ऑफ ए स्टेट इज हाईएस्ट, अन्य स्टेट मानकर इनकम केम देखा जीवो ना ताको ता भितरे हायर स्टेट भितरे कोन डिस्टेंस सेटा कहती इनकम डिस्टेंस। फॉरेस्ट इकोलॉजी ऊपर कार अधिक अच्छी,
एरिया माने को टाइप रो एरिया अच्छी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माने कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो इन टर्म्स ऑफ माने डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छी इनफांट मोर्टालिटी रेट है कि मैटरनल ए किए भल परफॉर्मेंस कर से अनुसार पॉइंट दि जाए तेणु से अनुसार पॉइंट होता प्रथम इनकम डिस्टेंस आसला एरिया आसला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी तमाने 2 3 4 1 एटा आंसर हम बुझीपारे क्वेश्चन टा वेटेज दिया फाइनेंस कमिशन कौन कौन क्या जार इनकम डिटेल्स 45% रखता 45 एम सब रखा से अनुसार जो जो स्टेट को जहाँ जहाँ मिली से अनुसार मिली कौन बुझेगा कि नहीं आहरी अन्य थिला बट 4टा मेजर क्राइटेरिया थिला दैट वाज यूज्ड एंड आई ये मत कही रखे कि 16 फाइनेंस कमिशन ऑलरेडी एस्टाब्लिश हो जाइए अरविंद पानागरिया has been chosen as the chairperson of the 16 Finance Commission and Finance Commission is established under Article 280 of the Constitution of India, hence it is a constitutional body and it consists of a chairman and 4 members. 4 members मानकर थांती ठीक है तापरे आसीबा में क्वेश्चन नंबर 26 Which of the following statement is correct? Double jeopardy is a legal protection that prevents a person from being tried again for the same crime before they have been acquitted and convicted. It also prohibits multiple punishment for the same offence. It Constitution of India provides protection against double jeopardy under Article 3. 20 रो 3 clause 3 कोटा ठीक अछि आ भितरु कोटा ठीक अछि आ भितरु कोटा ठीक अच्छी कही जाओ जितना लगोगे उतना बढ़ोगे नहीं कि जिते इन्वॉल्व रहिबा सेते आगु को जीवा जिते इन्वॉल्व न रहिबा सेते आगु जाई परिबा सब बड़े क्वेश्चन डील करो विभिन्न सेशन रे जोग दियो एवं इंटरेक्शन रे जोग दियो ट्राई टू स्पीक आउट आल्सो दैट इज देयर तो एटा देखिबा में कोन अछि एतने Learn double jeopardy is a legal protection that prevents a person from being tried again for the same crime. It is ठीक अछि किंतु before they have acquitted no after they have been acquitted it after हबो it after इतले हितांदा त माने एटा भूल अछि स्टेटमेंट लोकटा थरे एक्विटेड हे गेले धर गोटे केस गोटे कोर्ट रे केस पड़ी से कोर्ट केस ताकू एक्विट कर देछि ताले सेटा सेम जिनसटा आउ ताकू प्रोटेक्शन बा कन्विक्टेड हे धर कन्विक्टेड हे ताले ताकू आउ कन्विक्ट करा हबनी आउ थरे आउ अन्य कोर्ट करि पने से थरे को जा हबो से अनुसार so that is called double jeopardy माने कोन a person cannot be convicted for the same offense twice तो एटा भूल अछि स्टेटमेंट इट आल्सो प्रोहिबिट्स मल्टीपल पनिशमेंट एटा ठीक अछि मल्टीपल पनिशमेंट दी हेबन जा दिया हबो गोटे धर गोटे कोर्ट देछि ताकू दंड देछि कि एटा कि धर हा तापर हाई कोर्ट देला कि मृत्युदंड कि गोटे कोर्ट ताकू 10 वर्ष जेल देछि हाई कोर्ट ताकू 15 वर्ष जेल देला ताले गोटे धरा हबो हाई कोर्ट रो धरा हबो त मल्टीपल हे परिबन मल्टीपल नै द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन against double jeopardy under article 20 clause 2 नै clause 2 एटा 3 नो 2 त माने गोटे ठीक अछि only 1 only 3 only 2 एटा कोटा ठीक अछि 20 रो 2 तो 2 हबो only 2 एटा करो रे 2 only ऑप्शन लिखला भूल है ठीक है 2 ओनली हबो 2 ओनली कर दिया आंसर डी करो केवल गोटे ठीक 2 ओनली 20 रो 2 क्लास 2 ठीक अछि हैं आ गोटे क्वेश्चन देखि दबा लास्ट क्वेश्चन How many zonal councils were set up by Part 3 of the State Recognition Act?
Zonal councils are statutory bodies established under the State Reorganization Act 1956, and there are 5 zonal councils were provided: southern, northern, eastern, western, and central. They are statutory bodies, and all the zonal councils are chaired by the Home Minister of India. The respective chief ministers are also its members, and the other ministers can also be member as nominated by chief minister. The chief minister of the state becomes the vice chairperson of the respective zonal councils on rotation basis. The zonal councils are established to facilitate cooperation and coordination between the states, and also make suggestions for resolution of interstate disputes in India. But remember, the recommendations of zonal councils are not binding upon the states, so it is a merely recommendatory body. So the effectiveness of zonal council is yet to be proved in Indian context. So zonal council, and remember, the Northeastern Zonal Council was established under Northeastern Zonal Council Act 1971. So at present there are 6 zonal council कहले हबो, किंतु 1956 अंडर रे 5 zonal council तैयारी कराइता. That is northern, southern, eastern जोरा ओडिशा जाउची, eastern हेडक्वार्टर होउची कोलकाता, and northern, southern, western आउट होउची तुमरो central headquarters. Central headquarters अलगा अछि, एवं northern, southern, eastern, western. Central केवल इलाहाबाद रे रहिछि, एवं northern central रे यूपी अछि, एमपी अछि, मध्य प्रदेश अछि, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड. Eastern zone रे अच्छी बिहार, ओडिशा, वेस्ट बेंगल, झारखंड एवरा सब अच्छन. So please take a note of this. And zonal councils have their headquarters. They are recommendatory bodies, but they are established to facilitate interstate relationship in India. ठीक है पिलाने, this is all about your today's questions. Next question हमें देखिबा. So this is all about, first of all, I wish you happy Diwali to all of you. Let the Diwali, the light, lighten your life, or bring more happiness, more success, make you good human being on the earth. Okay, भगवान तुम मन समस्त को आशीर्वाद करंतु. Ada 247 OPSC प्लेटफॉर्म रे हार्दिक शुभेच्छा जनाउची दीपावली पई. ए दीपावली रे तुम मन रे कोन माने गोटे करेज आसू, गोटे स्ट्रेंथ आसू मन रे, एवं समस्त दुख दुर्दशा दूर हो, एवं तुमर लाइफ रे सक्सेस और हैप्पीनेस लेट बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक अछि. तो हमर Ada 247 OPSC रे जहाँ भी कोर्स किनिबो 27% ऑफ अछि, डिस्काउंट ऑफर. तो नो आवर ओडिशा वॉरियर बैच एगुरा सब जॉइन करिबा पई जे डिसाइड करिछो, त यू कैन जॉइन. दिस इज द राइट टाइम, एंड दिस विल बी वैलिड अंटिल 1st November. ठीक अछि. एवं एटा तो मु कहूची सब बळे तुमको वॉरियर्स 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हो जाईची. पीपल आर टेकिंग एडमिशंस एवरी डे, and you can join also course if you have decided to start a career in civil service. This is the best platform, I can assure you, for to provide an effective education or effective learning on various parts, various subjects of OCS examinations, starting from prelim to mains till interview. And we are providing general studies paper coaching, and also general English, Odia language, and essay papers in mains part, and also we are bringing an optional if possible for that purpose. ठीक है. So warrior join करो, एवं you can use my code, that is Y963 यूज कले तुम्हें मो कोड रे डिस्काउंट पाइबो. बाकी नो आवर ओडिशा बैच तो ऑलरेडी लॉन्च हो सालानी. पीपल आर टेकिंग एडमिशन. एथरे तुम्हें कंप्लीट पैकेज पाइबो. ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा पॉलिटी, इकोनॉमी, रीजनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवं विभिन्न प्रकार जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग ओडिशा. सो प्लीज जॉइन द बैचेस. गो टू द Ada 247 ऐप को डाउनलोड करो, एवं स्टोर को जाइए सेठी विभिन्न कोर्स देखो. इट इज इफेक्टिव, सेम ऑनलाइन ऑफलाइन रो किछि डिफरेंस नहीं. टीचर मैटर्स, फैकल्टीज मैटर्स. तेन जोटी
भल कोचिंग अच्छी जो भल पढ़ा होती जॉइन करवा दरकार एवं यहाँ तुमको सबुदिन सबु क्षेत्र में सेम इफेक्ट रहो कम इकोनॉमी रे कम पैसा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड आई विल मीट यू टुमारो विथ न्यू सेशन एंड कैरिंग मोर एंड मोर renewed questions for your preliminary examination 2023